It's recorded. Ji. I think I have been talking about. You can see the slides as well. Yes, sir. Okay. So I was introducing you with this chapter, chapter of the book, and I was telling you that some of the authors have the European origin. That's why uh, they were interested to investigate the similarities or to do the comparative studies or comparative law studies, especially in the corporate law. And so it's very common to have corporate law as a core subject in the European Unions. I also took a lot of benefit and took a lot of interest into that subject of comparative law. And that's why when I did my PhD research, I did a comparative study of certain jurisdictions. So it's very common to be a comparative law jurist or comparative lawyer in the European Union. So these people, they did that investigation regarding corporation in different countries of the world. Basically, they picked up the main regimes that included US. I am not sure it was not US as a whole. It was the state of Delaware, which is very famous. You will come to know later on. It is very famous for the corporate law in US in general as well, and in the US in particular. So they said and they concluded in their article and in their book that there are, although certain differences between the corporate law of different countries. So you have the laws from US, from UK, from European Unions, from Japan as well, I guess. I'm not sure, but maybe India. I'm not sure about India. So they concluded that although there are really some differences in the corporate law of the different countries, but underlying there is a very much similarity in the company law of these different countries. सर माइक ओपन कर Okay, so I was just saying that knowing this fact that there is a similarity in the corporate law of the different countries, despite some differences, there is very much similarity. So I was asking that what could be the possible reason of this similarity of the corporate law? What are your wild guesses? Any idea why are these corporate law of different countries are pretty much uniform? Maybe, sir, the transnational trade and investment purposes. Yes, to a larger extent, this was the reason. Sir, another reason is that no state is all in all, but every state is depending in some things. Another state depending on the first state.
So they have to uniform their procedure for business and trade, that they are able to do this business easily each other's. Yes, this also somehow similar answer to the given before. So historically, if you see that UK, it ruled many countries of the world, and our legal regimes, they are mostly inspired from that, and they ruled many part of the world. So that was the one reason. बल्कि next classes में हम historically देखेंगे, even the countries which were not ruled by UK, they also have somehow similar approach towards the corporate law and towards the companies. उसकी भी reason ये है that these boundaries of the states that we find right now, which were demarcated a century before that, there was a complete freedom of movement among the countries, and the people and the businesses, they could move comparatively easier in other countries. So that is why the trade was very much flexible between, especially between the European countries. And so they interacted very much between each other. And in order to get benefit from that, trade relationship, they also wanted to have some sort of uniform laws. So that is also one of the reasons. Additionally, as the economy and the trade grows, and as the world order, जिसे आप कहते हैं, world trade order, world trade increases, so there's more and more uniformity in the international rules regarding trades, so that there are certainty between the people of the world and the state regarding different legal regimes in the different part of the world. So you were right. Investment cooperation that is taking place between the countries at the national, international level, that is really pushing the countries to have some sort of uniform law. In general, you might be seen regarding human rights law, you know it, that there's a lot of uniformity. But corporate law, although it's a very specialized field, it is applicable on the corporations of a state only, but still they are there are many uniformities in the laws of the countries. अच्छा, ये one liner था. One of their another result of their investigation was that they said that it is also true that globally all the corporations throughout the world, they had almost similar type of problems. उनको जो problems face करने पड़े in their respective countries, उनमें भी तकरीबन similarity थी. So since there was similarity in their problems, so उनको जो उन problems को resolve करने के लिए जो solutions आए, they were also somehow uniform. Similarity comes to the economic exigencies of modern corporation. ये गालिबन हमने almost हुई है कि investment purposes के लिए कंपनी कॉरपोरेशन की जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपके पास रूल्स जो है वो सिमिलर हो. एक मुल्क का लॉ एक कंपनी को डिफरेंटली डील कर रहा हो, दूसरा डिफरेंटली कर रहा हो, तो देन ये जो मल्टी नेशनल का कॉन्सेप्ट है, या एक कंट्री का दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना, और या इस कंपनी का वहाँ पे काम करना, वो समटाइम्स प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए सिमिलैरिटी लाई जाती है. And then they say that the 5 characteristics are in particular found in the market economy. Do you have any idea? I hope you should have idea about market economies. Harun? Mr. Harun? Yes, sir, I'm here. Muhammad Harun.
ये मार्केट इकोनॉमी के बारे में आप क्या जानते हैं? So Countries having market economy, कौन सी वो country में? What are they popularly so known as? those countries in which जिनमें अक्सर ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो करती हैं और जिनके पास भाइयों, हमायूं, I think Humayun is not with us. He might be doing jogging or doing some other job. So we must mark him absent so that he is present in the next class. Itrat, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो ये मार्केट इकोनॉमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सर मार्केट इकोनॉमी मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मतलब वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड करते हैं या उनसे रेलेवेंट कुछ लॉज डिमांड करते हैं जो मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। और मोस्टली सर ये हांगकांग में है और यूनाइटेड किंगडम में है आई थिंक। गूगल किया? नो सर, नो सर। अच्छा, ठीक है। यस, अवेस, यस सर। क्या है ये मार्केट इकोनॉमी? सर ये मार्केट इकोनॉमी सिंपली हम कह सकते हैं जो मार्केट मतलब मार्केट में जो चीज हमें डिमांड में चाहिए होती है उसकी वजह से जो चेंज हो रही होती है ये परमानेंट नहीं होगी बस। countries having market economies. सर फिर मार्केट के हिसाब से कंट्री जो चीज जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो तो वो उसकी सप्लाई ज्यादा कर रही हो, मतलब वो जो परमानेंट वो नहीं कर रही होती है उसमें वो वेरिएबल जो मतलब जो जिस चीज की डिमांड उसमें ज्यादा है तो वो कर रही होती है। अली, मोहम्मद अली। सर मार्केट इकॉनमी ये होगी कि मतलब वो जो है वो प्राइसेस को और उसमें जो है ना वो सर वो मतलब लोगों की डिमांड को देखते हुए जो है वो उसको डिटरमिन करते हैं। ये सर डिमांड और सप्लाई वाला वो चेन आ जाती है, इस तरह का कुछ है सर। Yes, all those countries, all the capitalist countries, basically they are the market economies because they base their economic system on the basis of this market economy, or as some of you were saying, on the basis of demand and supply basis. Market is also basically a place, you know it. It's a place where supply is added, supply is given if there is a demand. And if there is no demand, there is no supply. So demand basically corresponds to the supply in a market. So all those countries which basically determine their priorities, economic priorities on the basis of demand and supply, normally they are known as market economies. Capitalist countries में normally यही market economy ही work कर रही होती है. Ali, you raise your hand. Any question? Sir, am I audible? Yeah. Sir, my concept about market economy is that there are two forces, demand and supply.
उसकी बेस के ऊपर सर मार्केट इकोनॉमी चल रही होती है सर. Am I right, sir? Yeah. This is what I just explained. Alright. So sorry, sir. I So forgot. Thank you. all those countries that have these type of systems, economic system, we call them that they are market economies. Up to takriban globally, it is being followed almost globally. There are exceptions, but वैसे. So these people, these authors say कि at least market economies में जितनी भी कॉर्पोरेशन हैं उनके पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जरूर होते हैं. एक कंपनी, हर कॉर्पोरेशन के या कंपनी के ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होते हैं. So this is a kind of similarity about the concept of company or the concept of corporation. So I might be using the term corporation or company interchangeably here, alternatively, because basically there's no difference between these two terms. But in certain countries, they do make a difference. At least, generally, the term company is used in the UK and the common law countries, while US basically they use the word corporation. So they have the law of corporation in each states. So they call it corporation. हमारे यहाँ corporation state owned companies को भी कहा जाता है, जिनमें state का अमल दखल होता है, उनको भी corporations का term use किया जाता है. और company के लिए जो common business entity है उसके लिए term use किया जाता है. अच्छा जी. तो what are those 5 criteria? Yes, जमशेद. सॉरी सर, मैं यही क्वेश्चन करने लगा था कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सी? ये तो I mean जो आपने already I was telling you वही characteristics ही अभी हमने discuss करने हैं. But all these characteristics or elements you might have studied. जिसमें legal personality है, one of your friends just told us. Legal personality, limited liability, transferability of share, and delegated management, and ownership's concerns कहें हम या ownership's control, owner's control हम कह सकते हैं. वो कहते हैं ये चीजें at least they are found in all the corporations of the market economy. जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसमें शायद जरूरी नहीं हो ये. आई थिंक मे बी इन्होंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं की या की होगी मेरे ख्याल में. दे माइट हैव सीन द कॉर्पोरेशंस देयर, सो दे माइट हैव सीन सम डिफरेंट लॉज or some different rules dealing differently with the corporation. But they say at least to the extent of corporations in the market economies, these are the common feature that are existing in all these. So if we know the concept of law company in Pakistan, we can presume that it is almost the same concept of company in rest of the market economies. क्योंकि हमारा भी जो system है वो market economy based ही है. You understand? You see? अच्छा. सर नॉन मार्केट इकोनॉमी के कोई एग्जांपल देते हैं? Capitalist countries जो होते हैं जो they are not market economies basically, जिनमें स्टेट का कंट्रोल ज्यादा होता है. उसमें मार्केट डिटरमिन नहीं करता है सप्लाई या डिमांड को, स्टेट डिसाइड कर रही होती है, मार्केट नहीं कर रही होती. सो चाइना के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि चाइना ने अपना सारा सिस्टम मार्केट इकोनॉमी की तरफ वो ले गए. दैट इज व्हाई दे आर ग्लोबली दे हैव बिकम सुपर पावर इकोनॉमिकली, एटलीस्ट दे हैव बिकम सुपर पावर. रशिया ने अपने आप को काफी ज्यादा, सो मोस्टली जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वहाँ पे दे वर समहाउ एंटी मार्केट इकोनॉमी और एंटी कैपिटलिस्ट उनको कहते हैं, यू नो इट. या जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ज्यादा है रूलर्स का, उनको हम मार्केट बेस्ड नहीं कहते हैं. सर हमारे यहाँ भी तो यही है कि जो स्टेट है या अथॉरिटी है उसका कंट्रोल होता है. जैसे ये कोई बाजार ले लें, सीडीए का बाजार हो, आरडीए का हो, उन्होंने रेट फिक्स किए होते हैं और उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई होती है. कभी कभी शॉर्टेज होती है और कभी कभी एक्सटेंड में मिल जाते हैं हमें चीजें. तो हमारे यहाँ भी तो अथॉरिटी का नहीं है वो. टू सम एक्सटेंट मिक्सचर है, लेकिन ये जो इनफैक्ट
वो कहते सर हैं वो कि रेट्स फिक्स होते हैं, वो डिमांड सप्लाई नहीं होती, नहीं होती। वो नंबर एक, रेट लिस्ट होती है, वो उन्होंने दी हुई होती है ताकि मोनोपोली ना हो, या फिर कुछ शॉपकीपर जो है वो हाई रेट्स पे ना कोई चीज बेचें। तो मार्केट इकोनॉमी का तो मतलब ये है ना कि रेट को देखकर डिमांड और सप्लाई में इजाफा होगा या कमी होगी। उसमें ये होता है वो तो कि डिमांड और सप्लाई तो आपकी पब्लिक को जो चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग होगी ना। वो रेट लिस्ट तो इसलिए की जाती है कि किसी को अगर ना पता हो तो वो रेट लिस्ट देख के वहां से परचेज कर ले, मतलब इट्स काइंड ऑफ अवेयरनेस टू द पीपल। yeah, somehow she has answered correctly कि डिमांड सप्लाई जितनी भी आ रही होती है दैट इज नॉर्मली इन द नॉलेज ऑफ द स्टेट या जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वो अगर फॉर एग्जांपल currently if you see the prices of different items they were raising because there was a supply problem, automatically the prices went up. The state was not able to control them. पीछे जो problems हैं supply नहीं आ रही, that is why they imported sugar, they imported flour to meet their supply needs. And once the supply for example I think the flour last week that was imported, so the prices of flour they came down 9 rupees at least in Karachi. ठीक है, similarly sugar में भी वो कुछ import कर रहे थे. So once the supply is injected, the prices would automatically come down. So the state was not unable to control them, although they could see, and they were just like Tamashai. They could do nothing because there was a shortage of the supply and the demand was increasing. तो जो डिमांड के मुताबिक जो प्राइस सेट हो रही थी उसी पे प्रोडक्ट वर बीइंग सोल्ड. यू सी, आई थिंक किसने अली ने क्वेश्चन किया, जमशेद ने. यस आई गॉट इट. ठीक है, बट वन ऑफ द रीजन इज ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि लोगों को या कंज्यूमर को फैसिलिटेट करे. तो इट्स प्रो कंज्यूमर स्टेप्स के द पीपल आर एबल टू नो व्हाट आर द rates of the product, and they are legally bound to show those list of rates which are visible under the law. Under the law ये provision है, which are visible to the people or the consumers and the customers. हमारे यहाँ करते नहीं है, छुपा के रखते हैं. ये go tactics होते हैं, you might be aware. ठीक है, legally they are bound, otherwise they are fined. You see food inspectors वगैरह इनको यही फाइन कर रहे होते हैं. अच्छा, एडिशनली ये जो 4-5 करेक्टरिस्टिक्स की जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये सिमिलैरिटी इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स द लार्ज कॉर्पोरेशंस, दैट डज नॉट मीन द स्मॉल कॉर्पोरेशंस, जिनको हम अपने यहाँ टर्म यूज करते हैं प्राइवेट कंपनीज. सो यहाँ पे उनका जो सारी स्टडी है दैट डज नॉट डील विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन or with the private companies, that basically deal with the public companies, which are basically large companies, where the investors are more than 50 or 100, and जिनमें investors ज़्यादा हैं उनमें उन companies में या उन types of companies में ये characteristics definitely पाए जाते हैं. You see, so again you have to differentiate between, number one, there is a similarity of characteristics, at least 5 characteristics, yes. Number 2, but these similarity is in the market economy only. And number 3, even within the market economy, they are talking about the large corporations or the public companies and not the private or the small companies. Now let's move to the next slide that is talking about the legal personality. आपको ये slides visible है या आपको ये zoom भी नजर आ रही है आप लोगों को? Zoom की नहीं सर, विजिबल है सर स्लाइड्स. सिर्फ स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर. कुछ और जूम के पिक्चर्स या कुछ और तो सर ये स्लाइड्स भी है और जूम के जो और फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे पार्टिसिपेंट्स और वगैरह ऑप्शन ये है सर. कैन यू सी द होल स्लाइड और हाफ ऑफ द स्लाइड?
No, sir, as you are updating, so it's updated here too, and we are able to see. बट कंप्लीट पूरा स्लाइड आप देख रहे हैं, पार्शियल तो नहीं जी कर रहे हैं, हाफ ऑफ द स्लाइड तो नहीं है आपके आगे विजिबल? नहीं नहीं सर, कंप्लीट है सर, बिल्कुल अच्छा सर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप नजर आ रहे लीगल पर्सनालिटी, व्हाट इज लीगल पर्सनालिटी सर? हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास, क्योंकि मैंने वो जूम का भी ओपन किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई नो इट्स ठीक है जी। सो व्हाट इज लीगल पर्सनालिटी? आई थिंक यू डेफिनेटली यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। सो द मीटिंग विल एंड आफ्टर 10 minutes. So we will be taking break after 10 minutes for the prayer, and then we will continue. Okay. So once if we get disconnected, so you must take a break of 10 minutes, and then you should rejoin it. I will share another link on the web on WhatsApp. अच्छा, लीगल पर्सनैलिटी के बारे में हम जानते हैं। Now my question is, what you people think, what function does this legal personality perform in corporate law? Uh, why do legislature feel the need to give this concept of legal personality to the corporation? Was it really necessary, or it was just because there are uh, very somehow dire consequences in some cases because of this legal personality? So why do legislature think that they should have this concept of legal personality? What do you say? Sir, actually, rights and duties are related to person. So, and this type of activities also have some rights to obtain from others, and at the same time they have some duties to perform for others. So if you don't declare this as a legal personality, so it means they don't have any right and duties. But as soon as we have declared this company's corporation as a legal personality, so the same features have been associated with this legal personality as a natural person has some rights and some duties. Yeah, Jamshed? सर इसको इसलिए शायद उसने जो लेजिस्लेचर है उसने लीगल सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बनाया है, क्योंकि एक कंपनी जो होती है वो बेसिकली ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो उसको रन कर रहे होते हैं। अब लोग जब कोई मर जाता है तो नया बंदा आ जाता है वहां पर, जिस तरह अभी ये हम पढ़ेंगे इसके बाद की परपेचुअल सक्सेशन वाली बात जो आपने की हुई। कंपनी जो है वो शादी नहीं कर सकती, वो वोट कास्ट नहीं कर सकती, इसलिए कुछ चीजें हैं, जिस तरह रफी मैंने पॉइंट आउट किया राइट्स वगैरह के बारे में, तो कुछ चीजें हैं जो आम जो नेचुरल बंदा है वो कर सकता है, और मिट्टी से बनी हुई और सीमेंट से बनी बिल्डिंग नहीं कर सकती, इसलिए उसको कंपनी कहकर लीगल पर्सनैलिटी ठहराया कि ये सेपरेट है। और आप जब करेंगे जो भी इस पे करेंगे, इसीलिए कहा ना लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जब भी सू करेंगे तो इसको सू करेंगे, और कंपनी भी सू कर सकती है कंपनी के नाम से किसी को, कंपनी के अंदर मौजूद बंदे नहीं। तो आई थिंक इस तरह की बहुत सारी वजूहत है जिसको देख के उन्होंने जो Okay, I will put one question mark on these comments before I give some comments from Ali, please. Yes, Ali. Sir, am I audible? Yes. Yes, sir. As Rafi said that there are some fiduciary relationship. Legal person के अंदर सर ये होता है कि there are corresponding rights and duties. लेकिन अभी जो जिस तरह जमशेद ने ये बात की कि कंपनी कैन नॉट सू अनदर कंपनी, मतलब इसके अंदर सर इस तरह होता है कि हम जो प्रैक्टिस अपनी देखते हैं, कंपनी किसी के थ्रू सू होती है। फॉर एग्जांपल सीईओ हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, ऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं, इसीलिए सर उनका कॉन्सेप्ट भी लॉ के अंदर मौजूद है। तो लीगल पर्सन के अंदर सर यही होता है कि एवरी ड्यूटी हैज एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग राइट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो इसलिए लीगल पर्सनालिटी का ये कॉन्सेप्ट जो है कंपनीज एक्ट के अंदर या कंपनी लॉ के अंदर एग्जिस्ट करता है सर। सॉरी मैं यहाँ पे ये कहूँगा, कंपनी मैंने बोला कि कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड। कंपनी जो होती है वो केस कर भी सकती है अपने नाम से, और उस पर केस हो भी सकता है। मैंने ये पॉइंट किया था, शायद मुझसे गलती से सर कुछ गलत कंपनी के ऊपर कभी भी सू नहीं आप कर सकते, कंपनी को कभी आप इंडिविजुअली नहीं सू कर सकते। कंपनी कभी जो होती है सू थ्रू समवन होती है सू। आप ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल अटक रिफाइनरी है तो आप अटक रिफाइनरी को सू करेंगे, वो थ्रू समवन सू होती है। Yes, you people give your comments on this comment of Ali, please.
सर डायरेक्टली हम कंपनी में सू कर सकते हैं। ये जो थ्रू का लफ्ज आ रहे हैं, तो वो तो जाहिर बात है कि बिल्डिंग खुद कोर्ट में पेश नहीं हो सकती है ना, थ्रू समवन नेचुरल पर्सन लाजमी बात है होगा, लेकिन वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव है। और उसकी दलील इस बात से है सर कि मिसाल के तौर पे अगर एक सीईओ मर जाता है या कुछ और हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो केस पेंडिंग है वो जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, विदड्रॉ हो जाएगा, बल्कि वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो थ्रू एनी लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन, उसकी अहमियत नहीं है, अहमियत उसी लीगल पर्सनालिटी की है, कंपनी इटसेल्फ की है सर। सर रफी भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन थ्रू इट्स, जिस तरह अली ने कहा है कि थ्रू इट्स समवन, तो थ्रू डायरेक्टर नॉमिनेट नहीं किया जाता कि फलां बंदा, लेकिन डायरेक्टर या सीईओ कहा जाता है, तो वो डायरेक्टर या सीईओ एट दैट टाइम जो भी होता है तो वो उसी के थ्रू ही किया जाता है। कंपनी एक बिल्ड नहीं कर सकते उसको, किसी के थ्रू ही सू करते हो आप। नहीं, ये भी लाजमी नहीं है। जब डायरेक्टर लिखा जाता है तो डायरेक्टर किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं अपने बिहाफ पर भी। सर हो बेसिकली सकता है जो सर मेन मकसद इंटरेस्ट है जो वो होता है फिर उसका रिप्रेजेंटेशन नाम होता है। चेंज हो जाता है। डायरेक्टर का अच्छा सर, वर्ड फॉर यूज एग्जांपल आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू गाइस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है हैरिस इंटरनेशनल, लेट्स से, और अगर उसको उसमें से उसको किसी ने सू करना है, कोई डैमेजेस क्लेम करने हैं, तो वो क्या लिख के सूट फॉर डैमेजेस क्लेम करेगा कि हैरिस मुझे डैमेजेस दे। ऑब्वियसली वो किसी को थ्रू करके सू करेंगे, तो फिर वो कंपनी से क्लेम अपना ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि सीईओ नहीं रहता, डायरेक्टर नहीं रहता, तो फिर ऑब्वियसली जो उनका नेक्स्ट ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा या जो उनको जिसका इल्म होगा वो उसको पार्टी बनाएंगे, फिर से नया तब नाम नया चला जाएगा। लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप हैरिस को फाइल कर दें डैमेजेस के, उससे 50 लाख रुपए का खर्चाने का दावा आप करेंगे। ये बेसिकली सर एक्चुअली और का ये नाम लेकर उसको सूप अली जो है ना वो सही सर बात कर रहे हैं। सर प्लीज माइक जरा ओपन कीजिएगा सर अपना। यस, बशारत। जिस तरह अली भाई कह रहे थे कि कंपनी को जो है वो सू नहीं कर सकते, कंपनी को सू करेंगे, कंपनी का नाम लेके सू करेंगे, लेकिन कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आके रिप्रेजेंट करेगा उसको जाके। So it means you are disagreeing with Ali. जी सर। Ali, how would you counter this argument? सर इन 2 year of my practice up till now what I have observed कि हम कंपनीज को काफी रिप्रेजेंट करते हैं और किसी कंपनी को सू करते हैं तो उसके अंदर यही जनरल प्रैक्टिस ऑब्जर्व होती है कि इट इज ऑलवेज समवन के थ्रू समवन हम सू करते हैं। तो माय काउंटर आर्गुमेंट इज दिस, इफ देयर इज समथिंग एल्स तो आई वुड अप्रिशिएट कि मुझे कुछ लर्न करने के लिए नया मिलेगा। नहीं मैं ये चीज नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सू करेंगे तो कंपनी के नाम पे सू करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि फलान डायरेक्टर है उसको हम जो सू करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर और ये सीईओ चेंज होते वो रहते हैं। ऑब्वियस है सर, वो तो ऑब्वियस है कि आप कंपनी जब आप से सू लेंगे करेंगे मगर तो थ्रू कंपनी का समवन नाम करेंगे। लेंगे, क्योंकि आपने मेंशन जी किया था जी कि आप सर, हारिस को नहीं सू कर सकते, तो आप हारिस को ही करेंगे, लेकिन हारिस के बिहाफ पे कोई बंदा जाएगा वहाँ कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको, तो आप हारिस को ही बिल्कुल करेंगे, डायरेक्टर को नहीं करेंगे। बिल्कुल सर कंपनी शो होगी, पर थ्रू बीच में आएगा, थ्रू किसी न किसी के जरिए होगी। सिंपल सा एग्जैक्टली ही एग्जैक्टली हाँ वो इस तो जहरी बात है, जिस आप इन्होंने बात की थी कि वो इंटूम का एक बना हुआ कमरा है या बिल्डिंग है, वो तो नहीं जा सकेगी, लेकिन कंपनी का नाम आएगा वहाँ पे कि इस कंपनी को सू किया जा रहा है, लेकिन फिर कंपनी खुद तो नहीं जा सकती, तो फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाएगा। So if I pose सर another आपका पॉइंट था question, कंपनी को सू कर सकती है। if I pose another question, that if we have to fix the liability, so would this liability be fixed on the company or any of his persons who are representing him? सर इसमें दो चीजों को देखा जाता है, कुछ Ali should answer this question. सर कंपनी सर Company. So why company then? Sir, obviously the authorized person is not responsible towards other person. He is only being sued through the company. That's it. He is only representing the company. He will advocate. He will be doing advocacy related to the company, but he won't be giving the damages, which company would be like sanctioned or penalized to give. Okay, so in other words, representative could be a rep from the company, but he is not a company at all. Company and the rep are altogether two different persons. That is why company has this concept of legal personality. Debate हमारी गई कहीं और. So मैंने ये पूछना था, आप म्यूट हो जाए आप. अच्छा जी.
Okay, so my other question was that, Naeem, you want to add something? Sir, I wanted to add a few things with respect to the question.